Question number third says, explain the data wrangling process with a suitable example. What is data wrangling process? Data wrangling is the process of cleaning, transforming, and restructuring raw data into a usable format for analysis. Its workflow is raw data to discovery and assessment, then cleaning, then transformation, then validation, publishing, then analysis ready data. Real world example is sales transaction dataset. Let's take this scenario of e-commerce company has raw sales data in multiple formats: CSV, Excel, JSON with inconsistencies. This is the table. John Smith, Sarah Jones, and this one, all their entries: purchase date, amount, product, and region. Okay, issues identified are this one is missing customer name here, and something what is this in, this is in the dollar values, and remainings are in rupees amounts. Okay, my date format is are different for everyone: inconsistent date formats, currency symbols and formatting, missing customer names, inconsistent capitalization, duplicate regions labels, data type mismatches, typos in product names. Step 1 is discovery and assessment. Profile data 5000 records, 6 columns. Identify data types: 2 strings, 1 date, 1 numeric, 1 string, 1 string. Okay, detect missing values: 2% missing customer name, 0.5% amount errors. Check duplicates: 47 duplicate transaction IDs. Validate ranges: amount 10 to 15,000, region varied areas. Step 2, cleaning. In this issue is missing values. Problem T003 has missing customer name. Solution: flag as unknown customer or remove record. Decision: remove cannot impute customer name reliably. Issue 2 is duplicate transaction IDs. Issue 3 is formatting. Issue is currency. Okay. Cleaning steps: remove dollar symbol from 2000, remove extra decimals, customer to convert to float. Okay. Clean data is this. This is the clean data where the names was here name was missing. We have removed that name and wrote the uh, remaining values, remaining entries. On John Smith date formats, we have make all date formats same. Amounts on all are in same, not a dollar sign. We have removed it. Regions, here somewhere used the United States, somewhere used the US, somewhere used the US. We have keep all the same: USA, USA, USA. Here we can see the products: laptop, mobile, tablet, iPad. Step 3 is transformation, standardized formats. Transform all everything in standardized format. This that format, standardized date format is year, then month, then date. Okay, day. YYYY Okay. Standardized region names: all USA, EU, Asia, and India. For India, it is IN. Standardized names: title case. First name, first character of name and surname is should be capital, and rests are small. Okay. Standardized product: match against product catalog. Transformations applied: date all to year, month, and date. Convert everything in these formats. Here it is written. Validation: step 4 is validation. Have a validation check: no missing critical values, all dates in valid range. 2024 0101 means 1 January 2024, 2%. All amounts should be greater than 0 and smaller than 50,000. Region in valid set: USA, Europe, Asia. Product in authorized catalog. No duplicate transaction IDs. Customer names follow naming convention. All records have 6 columns. Step 5 is publishing. Final clean dataset ready for analysis. Total records 4953. Column 6, data quality score 98.7. So let's solve the next question, which is difference between errors and artifacts and write to any two imputation techniques. What are errors? Errors are mistakes in data recording or measurement that are deviations from true values. Its sources are manual data entry mistakes, typos, transposition, measurement instrument malfunction, software bugs in data collection, human judgment errors. Examples are age entered as 999 इंस्टेड ऑफ 29, गलती से एज गलत डाल दी,
मतलब इंसान की गलती से कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर रीडिंग -500 डिग्री सेल्सियस इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकता है। We have put customer ID as 12A34 instead of 12345. It can be a mistake. Detection. How can we detect it? Outliers, validation rules, and domain knowledge. We can see that -500 degrees Celsius is not possible on Earth, uh, which is okay. So here is domain knowledge works. We can see that -500 degrees Celsius is outlier. So we detect it by this treatment is correction or removal. Either we can correct it or remove that value, which is outlier value. Artifacts. What are artifacts? These spurious patterns or anomalies introduced by data collection process not representing true phenomena. Sources: sensor noise and interference, data transmission errors, format conversion issues, systematic bias in collection. Examples are periodic spike in sensor data due to electrical interference, weekend or holiday pattern in sales artificial due to store hours, not real demand. Data collection period boundaries creating artificial patterns. Detection: how can we detect it? Using pattern analysis, temporal clustering, domain expertise. Uh, what is its treatment? Using filtering, smoothing, normalization. What are key difference between both of these errors and artifacts? Individual point mistakes, correctable or removable. Artifacts, systematic patterns from removal. Now, imputation techniques are mean, median, mode. इम्प्रेशन टेक्निक्स. व्हाट इज इम्प्रेशन टेक्निक्स? जैसे कोई वैल्यू मिसिंग है तो अपन उसको रिप्लेस कर सकते हैं कितने तरीके से. एक तरीका होगा कि अपन उन बाकी डेटा सेट्स का मीन, मोड या मीडियन निकाल लो, उनसे रिप्लेस कर दो उस मिसिंग वैल्यू को. ओके, देन के नियरेस्ट एल्गोरिथम इज वन ऑफ मोर इम्प्यूटेशन टेक्निक. के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम क्या कहती है? रिप्लेस मिसिंग वैल्यू विद वेटेड एवरेज ऑफ के नियरेस्ट नेबर्स. हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लिया, उससे बाकी पॉइंट्स का डिस्टेंस नाप लेते सारे, और फिर जो भी के नियरेस्ट मतलब जो जिनकी डिस्टेंस सबसे कम है के पॉइंट्स उनको छांट लेंगे और उनके बेसिस पर उनका कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, और उनके बेसिस पर अपन उस मिसिंग वैल्यू को ओवरराइट कर देंगे, फिल कर देंगे उस वैल्यू को. एवरीथिंग इज लाइक दैट. We found this distance using Euclidean distance, which is this formula. Okay. So example you can see step 2 this. Advantages: considers feature relationships, adapts to local data patterns more accurate than mean imputation, preserves variance better. Non-parametric approach. What are its disadvantages? Computationally expensive for large data sets, sensitive to feature scaling, performance depends on case selection, cannot impute when all features missing, assumption similar records have similar values. Okay. Its comparison technique table is given here. So now question number 4: explain any 4 common feature engineering techniques for continuous or categorical data. What are feature engineering techniques? Feature engineering is the process of selecting, transforming, and creating features that make machine learning models more effective. The first one is normalization, min-max scaling. Scale features to fixed range 0 to 1, preserving original distribution. What is its formula? X normalization equal to x minus x min divided by x max minus x min. Here is example given of customer age. Original ages are 20, 25, 35, 45, 60. Minimum is 20 and maximum is 60. Using normalization, 20 minus 20 divided by 60 minus 20 is 0.00. For 60, this is 1. Normalized is 0, 0.125, 0.375, 0.625, then 1.00. Applications of it normalization is distance based algorithms, just k nearest neighbor, k means, clustering, and neural networks. Image processing, pixel values 0 to 225 to 0 to 1. Advantages: preserves original distribution, handles outliers boundary. Standardization, z-score normalization, we both this को. Scale features to have mean 0 and standard 1, useful for normal distribution data. Its formula is this: x standard is equal to x minus mu divided by sigma,
where mu is mean and sigma is standard deviation. एग्जाम्पल टेस्ट स्कोर, ओरिजिनल स्कोर 60 70 80 90, मीन 80 आया इसका अपन पर निकाले तो, और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 14.14. स्टैंडर्डाइजेशन से वैल्यूज अपन फाइंड कर लेंगे इसके रिस्पेक्ट में, जो मीन वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में, तो स्टैंडर्डाइज के बाद -1.14 दिस वैल्यू आ जाएगी. इट्स एप्लीकेशंस आर लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM support vector machines, principal component analysis. What are its advantages of standardization? Handles outliers well, assumes normal distribution. Now feature winning discretization. Its purpose is to convert continuous variables to categorical by grouping into bins. Example, income to income bracket is this, then result is this, winning low medium medium high high. Convert जैसे एक इंटरवल को किसी कन्वर्ट कर देना, जिस 0 से 25 लाख से कमाने वाले हो गए लोवेस्ट इनकम वाले, 25 से 50 लाख कमाने वाले हो गए मीडियम में आने लग गए, 50 लाख से ऊपर वाले हाई में आने लग गए. तो वैल्यूज इन इंटरवल्स के बेसिस पे अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे बिन्स में. बिनिंग मेथड्स इक्वल बिट बिनिंग, इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग एंड कस्टम बिनिंग. एप्लीकेशंस ऑफ इट्स आर रिस्क कैटेगराइजेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड हैंडलिंग एट्रीब्यूशंस, distributions. Its advantages are captures non-linear relationships, reduces noise, handles outliers. What is one hot encoding? Its number 4 engineering technique is one hot encoding for categorical data. Its purpose is to convert categorical variables to binary features for machine learning algorithms. Example, product category, original categorical electronics, fashion, electronics, home fashion, one hot encoding, electronics 100, fashion 010, home 001. Result matrix, here matrix we have created for all the values. Comparison with label encoding. Its applications are tree based models, linear models, neural networks. Its advantages are one hot encoding and advantages are prevents ordinal assumption, suitable for independent categories. So feature engineering workflow is raw data to domain knowledge understanding, and then EDA, exploratory data analysis. Feature selection, remove irrelevant feature transformation, normalize, standardize. Feature creation, new features from existing feature interaction, combine features, model training and evaluation, feature importance analysis, iterate and optimize. So next question is where is the next question? For the dataset, this compute mean, mode, median, and standard deviation. Explain when to use each. Okay, एक डेटा सेट दे रखा है उनका, अपने को मीन मॉड मीडियन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और अपने बताना है कब कौन सा यूज़ आता है. डेटा सेट दे रखा है ये, और पहले तो ऑर्गेनाइज कर लो डेटा को, फिर उनको सॉर्ट कर लो 12 दिस है ना. देन काउंट उसके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं इसके अंदर, 3 3 6 7 वैल्यूज हैं, तो 7 काउंट के अंदर स्टोर करा लिया. मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? Sum of all the values then divided by total number of values. So we have find the sum and then divided by 7 equal to, तो अपना मीन आ रहा है 17.43. मीडियन कैलकुलेट करेंगे. मीडियन क्या होता है? ऑड वैल्यू के लिए मीडियन इज मिडिल वैल्यू ऑफ सॉर्टेड डेटा है ना, और इवन के लिए होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, मिडिल दो वैल्यूज का एवरेज. सॉर्टेड कर लिया, पोजीशन निकाल ली, उसका मिडिल पोजीशन देख ली कौन सी आए, 4th नंबर पे, विच इज 15, 0 1 2 3 4 पे 15 आया. ओके, देन कैलकुलेट मोड. मोड इज जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो जिसकी डेटा सेट में, जैसे 12 दो बार आया, 15 दो बार आया, 18 एक बार, 20 एक बार, 30 एक बार, तो 12 और 15 दोनों दो बार आए, तो दोनों क्या होगा, मोड होगा. इसके बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है ये. बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसमें 2 मोड हो जिस डेटा सेट में. कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि अपन मीन से कितना डेविएट हो रखे हैं, तो इसको निकालेंगे xi माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1 अंडर द रूट. डेविएशन स्क्वायर्ड कैलकुलेशंस. So we have find these deviations for all the values and square them. This is the 6.27 is the our standard deviation. Result summary, mean आया 17.43, median आया 15, mode आया 12 and 15. Standard deviation is 6.27 and range is 30 to 12, with 30 minus 12 which is 18. Now when to use each measure means when to use mean, mode and median.
तो मीन को कब यूज़ करेंगे? डेटा इज व्हेन डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नो एक्सट्रीम आउटलायर्स प्रेजेंट, नीड फॉर एल्जेब्रिक कंप्यूटेशन, want most average representation. When to avoid it? Skewed distributions, outliers pull mean away from center. Okay, categorical data, small datasets with extreme values. Its example is average salary of company employees if no CEO outlier. जैसे CEO क्या करेगा, उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी होती है बाकी नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के कंपेरिजन में, अगर उसको भी अपन डेटा सेट में जोड़ लेंगे तो बाकियों की मीन एवरेज बढ़ा देगा वो, तो इसलिए वो एक आउटलायर हुआ है CEO, उसको नहीं जोड़ना है। तब अपन यूज़ करेंगे मीडियन को कब यूज़ करेंगे? आउटलायर प्रेजेंट टुवर्ड्स टू एक्सट्रीम्स, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस, इनकम सैलरी डेटा, राइट स्क्यूड, प्रॉपर्टी प्राइसेस, अवॉइड व्हेन नीड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, नीड फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स। इट्स एग्जांपल आर मीडियन हाउस प्राइस इन सिटी लेस अफेक्टेड बाय लग्जरी प्रॉपर्टी। जैसे कि अपने को ना हाई रिच वाले भी नहीं चाहिए ना लोअर वाले भी नहीं चाहिए, मीडियम में चाहिए, तो अपन तब उस टाइम पे मीडियम का यूज़ कर सकते हैं, मीडियम का यूज़ कर सकते हैं। व्हेन टू यूज़ मोड categorical data, nominal data, when the data is categorical or nominal data. Most common occurrence needed, identify a popular choice by multimodal data analysis, avoid when continuous data with many unique values. Need for mathematical calculation, example, most popular product category in store, standard deviation. Use when measuring data spread variability, compare consistency between datasets, quality control, consistency important, risk assessment in finance. Avoid when only need central tendency. Distribution is not approximately a comparability of two men. Then so in the next वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, हमने इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करें, अगले में हम 5 से अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन लेट्स बाय।